Ladies and gentlemen, welcome to the second session, Spirituality in Daily Life. For this session, our esteemed spiritual gurus shall be joining. May I call upon Mrs. Nanduri ji, Joint Secretary, Ministry of Culture. I take the huge pleasure to welcome Bhavani Rao ji from Mata Amritanandamayi Institute, and Shri Sadhvi Shilapiji Maharaj ji, Virayatan. I also take the pleasure and honor to invite Pujya Bhai Shri Ramesh Oza ji from Rajchandra Mission. Please put your hands together, ladies and gentlemen. We also welcome for the next panel Shri Yogi Niranjan Nath ji, Sant Dhyaneshwar Maharaj Sansthan. I take the pleasure to welcome Dr. Jayanti Ravi ji from Auroville Foundation. We also welcome Master Ji Shri Rajesh Kumar from Good Home Journey. Also, let me take the pleasure to welcome Right Honorable Patricia Scotland, KC, from Commonwealth Secretary General. And a kind request to our esteemed spiritual leaders to restrict your address to 5 minutes as we are running short of schedule. Let's all put our hands together and welcome our esteemed panel for the plenary session, Spirituality in Daily Life. Ladies and gentlemen, may I now request Mrs. Nanduri ji from Ministry of Culture, Joint Secretary, to give the opening remarks. నమస్కార్. హైదరాబాద్లో ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి మహోత్సవానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. నాకు తెలుసు అందరికీ ఆకలేస్తుంది, కానీ కాసేపు వెయిట్ చేయండి. ఓన్లీ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది స్పీకర్స్ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దెన్ 5 minutes ఈచ్. దిస్ ఈజ్ మై ప్రామిస్ టు యూ. and only इसमें I have to tell you only 3 things. Spirituality in daily life. या क्लैप जो है वही क्लैप दीजिए एक बार जोरदार. डेली लाइफ का स्पिरिचुअलिटी है, हम यहाँ पर कोई भाषण नहीं दे रहे हैं. एक तो पहला चीज है एक बच्चा. When a child is there, for a child mother is everything. She or he surrenders himself completely to the mother. That is a spirituality. When a youth is filled with energy, that energy translated into a positive energy, it is a spirituality. A mother who cooks food, what she does, my mother, I tell you example of my mother. My mother, he continuously used to chant something while cooking the food. With all that chanting, the positive energy goes into the food. That is a spirituality. A father takes the whole responsibility of the house and that is also the spirituality. And in the office, we are all working with sthita prajnata. That is a spirituality. So every walk of the life, we have the spirituality. All the leaders, esteemed guests, I thank them all. Here the panel is full, is maximum majority women are there. So all the women, this is a sincere request, you follow the spirituality in your life, whatever way you can. And with this, I just want to say one Shanti mantra. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kasyet dukh bhavayet. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you.
Thank you, madam. May I welcome Pujya Bhai Shri Ramesh Bhai ji onto the stage. And I also welcome Shri Yogi Niranjan Nath ji and Dr. Jayanti Ravi ji to kindly join us on stage. A huge round of applause, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to invite Dr. Bhavani Rao ji, Dean, School of Social and Behavioral Sciences at Amrita Vishwa Vidyapeetham. She is also the director of 2 research centers, and she has been designated as India's only UNESCO chair in gender equality and women's empowerment. Dr. Bhavani Rao ji's address, please. Om Amriteshwarya Namaha. Very good afternoon to everyone, respected Daaji and the members of this wonderful organization, representatives of the various traditional spiritual lineages who are here, the key representatives of the Ministry of Culture, Uma ma'am over here, and all the dignitaries on stage, off stage. My humble namaskarams to all of you, also to my dear sisters who are sitting here in the audience. Do I have 5 minutes, ma'am, or 10 minutes, ma'am? 5 minutes. Okay, so I'm going to cut everything down to 5 minutes. So the topic is spirituality and life. Now, I think everybody here has a pretty good understanding of what spirituality is, and definitely we all have some understanding of what life is. And what ma'am said just before, the spirituality and life are actually inseparable. They form the same thing. It formed, as Amma says, they're 2 sides of the same coin. And Amma herself, I'm Amma's representative over here speaking as a part of Amrita University. She's a wonderful example of how you can actually integrate spirituality and life. She embraces everyone, irrespective of their caste, their creed, their color, their economic status, their educational status. And to a great extent, that forms the inspiration for me to understanding how best to blend spirituality and life. And not just that she embraces everybody, but almost everything has that infusion of spirituality, whether it's the educational institutions, the humanitarian operations and activities, environmental protection, science and research, everything has an element of spirituality. Amma says that spirituality begins and ends with compassion. And Sanatana Dharma, we know that creation and creator are not 2 but 1. And the creation is verily the manifest form of the creator. And therefore, we must love and serve all by seeing the creator in all of creation. And to not serve others and to serve oneself, Amma says, is not life, but it's death. And therefore, for us to have this love and compassion, like I said, compassion is the beginning of spirituality, is the quintessential way forward to integrating spirituality into life. And how do we do that? I can share with you the example that we have at Amrita. So Amrita as a university is built on 2 fundamental principles. One is that we have compassion-based research, and we have two kinds of education, education for a living and education for life. Now you may ask what this difference is. Education for a living is the kind of education that earns you your bread and butter, puts a roof over your head, good clothes on your body, your vehicle to drive. And education for life is compassion, love, kindness, and all the other things that actually will help you lead a better life. It is spirituality in life. Amma also says that there are 2 kinds of poverty. One is the lack of food, clothing, and shelter, and the second kind of poverty is the lack of love and compassion. But she says if you address the second kind of poverty first, you automatically deal with the first kind of poverty, because if you do have love and compassion, then you will serve those who do not have food, clothing, and shelter. And that is why the education at Amrita has this 2-fold approach to education, both for living and for life. And within the education for life, in its core, are the values of compassion. Now, how do we implement it? We have a very unique program at Amrita called Live-In Labs. And what does that do? All faculty and students at Amrita are mandated to spend time in villages across India,
working with the people in the villages, co-designing problem interventions to their problems. Now, what does this do? One, we do have wonderful interventions that come. This is the compassion-based research. Like, so for example, chemical engineering students will get together with the ECE students. They build this wonderful solar distillation unit for villagers who had lemongrass growing wild so that they could distill the lemongrass and create lemongrass oil. That becomes their income for them. So it's a very nice way of improving the economic vitality of that village by using the natural resource of the village. But what does it do for the students? One, gratitude. They see how villagers live with such little resources and how they still manage to be happy. With that comes a very important lesson. Happiness is a decision, Amma says. Whether you laugh or cry, time will pass and your life will pass. You might as well be happy instead of being sad. The very important values of gratitude. Second is respect. You find that people in villages can be very strong. I mean, women in villages are much stronger than I am. They can stand for longer hours. They work in the sun. They have much better mental resilience than I am. So they're much, much stronger. So you also learn to respect people. And definitely, it develops within you empathy and compassion. So these are the kind of values, these are the kind of education for life that we're able to bring into the students at Amrita through this program called Live in Labs. Now, I can just put it all into a sutra form from our traditions. The Lalita Sahasranama, Shloka 659, talks about Devi and extols her as Om, Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti, Swarupinye Namaha. What does that mean? Ichha Shakti, the power behind motivation. What makes us act? What is it that is at the depth of our intention? Now, this intention, this Ichha Shakti has to be driven by compassion. What motivates us must be compassion. An example from Amma's life. Like when she was very young, she was born into a fisher community. Now, in the fishing community, girls are not supposed to touch boats that go into the sea. It is considered taboo. It's against the social, religious culture of that particular group and community. Now, one day what Amma found was that an old lady who was sitting, she couldn't get across to her family to make food because the boatmen had gone for lunch. And she was crying at the edge saying that, what am I going to do? I won't be able to go across and make food. So Amma was moved by compassion. She picked up the little boat over there that you use a long pole to move across. She's never done it before. She said, I'll take you across. You come. So she takes the grandma and rows the boat across the backwaters. And seeing this, there's crowd on both sides. And everybody is petrified because Amma is taking this little girl, is rowing a big boat across the backwaters. And of course, the line boat passes by and there are waves and everybody is so worried. But she manages to get it across. And as soon as she gets the boat across from both sides, there is a thunderous applause. And she gets a nice beating from her mom for taking the government boat and doing things that she was not. But she was motivated by compassion. She was not motivated by rebellion. She was not motivated by activism. She was not trying to right a social justice. She was motivated by compassion. Compassion makes the essence of all our actions correct. The second is Jnana Shakti, knowledge. What kind of knowledge are we talking about? Two kinds of knowledge. One is scientific knowledge, hardcore facts, scientific facts, data. We know how important data is in our life. Scientific facts. But the second kind of knowledge comes from compassion. It's that empathetic knowledge of understanding what the needs of people are. What the need of the other is to understand a situation below the surface through compassion and through empathy. An example of that, when the tsunami struck our ashram, over 100,000 of people in that strip were dislocated. Their homes were washed away, their livelihoods were destroyed. They were all waist to neck deep in water, swimming across for safety. We evacuated 25,000 people during that tsunami time. 2004 tsunami, exactly 20 years ago. First thing that Amma did was made sure there was hot chai available for everybody who was moved. Why hot chai? It's one of the first things that you give that gives you some sense of comfort, some sense of grounding yourself. Second is she made sure that the food that was prepared tasted like fish. Why? Because they were fishing people. They were used to eating fish. Now we are an ashram.
We don't cook fish, but we made sure that the food matched the tastes of the local people. This is an empathetic understanding of what the needs are. She made sure that they all got glasses because they lost their glasses. Again, we know that people, now from science, we know that people who actually lose their vision or who have lowered vision in the time of disasters actually face a larger trauma than those with perfect vision. So small acts, micro acts of kindness, fueled by the knowledge that comes from an empathetic understanding of others. I said Jnana Shakti, two kinds of knowledge. Third is Kriya Shakti, the power of action. And the power of action should be altruistic, like Madam said, right? You have to have Nishkama Karma from the Bhagavad Gita. What? You do not expect the results of your actions. This is super critical to have. Make sure that you have the energy to continue your action, to make sure that your action is not tainted by the wrong kind of motivation. For compassion has no other motivation than its own. I hear a bell. Okay. And then the other kind of action is that it should have Shraddha, awareness. It should have resource efficiency, no wastefulness, and it should be respectful. It should be respectful of the other. And here I will tell you another story of Amma, really quick. Amma says that when you go to swim in a river or in the backwaters, the first thing that you will feel when you are in the water is the urge to pee. But the river is Devi, and Amma always remembers that her mother told her, Damayanti Amma told her that the river was the goddess. And if you remember that the river is a goddess and is Devi, automatically you will have the self-control not to pee. The respect and the reverence to see everything as divine will give you the self-control that you need to make sure that your actions are respectful, your actions do not pollute, your actions do not perpetuate any kind of inequalities, any kind of oppression. So it is, in its sense, the most fundamental value that you can define within Sanatana Dharma, this value of respect and reverence. So with that, I come a full circle, and thank you so much for your attention. Om Amriteshwarya Namaha. Thank you very much, Dr. Bhavani Rao ji. I now take the pleasure to welcome Pujya Sadhvi ji, Shri Shilapiji Maharaj from Veerayatan, a leading NGO in India, who has traveled around the world giving inspirational discourses and talks to spread Tirthankar Mahavir's messages to tens of thousands of people, both young and old. Ladies and gentlemen, Sadhvi Shilapiji Maharaj. Om Mangalam Omkara Mangalam Veer Mangalam Mahavir Mangalam Om Mangalam Omkara Mangalam. First of all, my pranam to my revered Guru, Padma Shri Pujya Acharya Shri Chandana ji, who is not present here today, but she has sent her deepest love and blessings for all of you, and warm wishes, very warm wishes for the success of this amazing, amazing program. My special salutation to Revered Shri Daaji ji and salutation to all venerable faith leaders. Ladies and gentlemen, before I start talking about the subject given to me, I would like to share one of my experiences with you. One fine morning I was meditating, I felt that God was talking to me personally. And I said to the Almighty, God, you often talk about heaven. Heaven is so beautiful, and people in heaven are so amazing, so beautiful. Is there any place on the earth where we can find wonderful people
like they are in heaven. And you know what God said? He said to me, from March 14 to 17th, go to Global Spiritual Mahotsav at Kanha Shanti Vanam, the world headquarters of Heartfulness. You will find my people. They are wonderful, amazing, extraordinary people. My warmest greetings to all of you, ladies and gentlemen, and I welcome you all at this divine assembly. I am thrilled to see that thousands of passionate people are working together to make this world a better place. You all are working hard to create a world of non-violence, peace and compassion. And I'm sure these efforts will not be in vain. Together, we will be able to make humanity understand the only way to live in this world is to let live. Without compassion, without peace, we live not in the cosmos, but in chaos. My brothers and sisters, we all agree that we are going through very challenging and very hard times. Every single day we hear horrific news of rape, murder, war, and terrorism. But we make it worse by continuously listening and talking about it. And sometimes our media also makes the scenario even shorter by exaggerating and publishing ongoing negative stories. Psychologists say that what you continuously watch, think, and hear, we become. By constantly viewing and thinking about hate, violence, and war, it seems that our subconscious has become agitated and negative. Therefore, despite tremendous development and opulence in this world, there is no peace within us. 300 years ago, after the industrial and scientific revolutions, we thought that with so many modern comforts, we would be able to solve all our problems. But surprisingly, nothing has changed. 300 years ago, a man would cry sitting under a tree. Today, a man cries sitting in an air-conditioned room. Only the surroundings have changed. Unfortunately, the crying is the same. My friends, in order to bring spirituality in our daily lives, in addition to our daily routines, it is very important to watch what we hear, what we talk, what we see, and what we read. This will directly impact our spiritual development in our daily lives. My friends, peace is an attribute of our individuals. Peace is an attribute of inner world. Unless individuals become peaceful, no peace can be brought onto this planet. When we engender animosity, hate, evil, and anger, we are the first victims of our anger and hatred. And when the anger is generated within ourselves, then we start harming others. So if we wish to envision a peaceful world, this initiative should begin from within us as individuals. We all have signed up this conference. We came to this Global Spirituality Mahotsav because we believe that if we all work together, hate, violence, and war can be combated and peace can be brought into this world. So today, we all participants present here take an oath that from now on, we will not commit any violence, nor listen to or propagate any kind of violent act or endorse any kind of violent activity. At my workplace, at my home, I will handle any situation, any conflict or adverse scenario peacefully because I want to eradicate hate, conflict, unrest from this planet. In order to achieve this, I want to take the first initiative of peace in my life, in my family, in my workplace, and my community. With this commitment of non-violence and peace in our lives, when we go home on the 17th, people should be surprised to see us. Wow, you are transformed. You look so peaceful. You handle every challenge so gracefully. And where did you get this? And all of us can proudly say, because I attended the Global Spirituality Mahotsav, which is trying to bring a world of peace,
love, and compassion on this planet. I'm part of this declaration and trying to do my bit by changing my behavior. Friends, I'm very confident that with these startups and initiatives of individuals, we can transform the world. There is no other way. Small slides lead to broken families and injustices at a micro level get converted into big wars. So these small initiatives from individuals are a way forward to realizing the big dream of world peace. Normally people say, I never do anything wrong. I live my life peacefully. I go to work every morning, come back in the evening, spend time with my kids, watch TV, go to the gym. What's wrong with that? What do I do to make this world a violent place? But I'm saying, my friends, that not doing wrong is not enough. Actively doing good is also required to make this world peaceful and compassionate. Outer growth, outer achievements, materialistic advancement seem to be the only mechanism to measure somebody's success. So if in addition to the IQ test, we had a compassionate aptitude test to measure someone's growth and capability, we would have an absolutely very different human race on this planet. My brothers and sisters, we have fought enough in the name of religion, nation, color, race, and gender. But now is the time to set aside all these outer differences and join hands to make this world a beautiful place full of love and compassion. We may belong to different communities or different religions, but the blood flowing in our veins is the same. Our anger is same, our hatred is the same, so our love has to be the same. If there is God in the world, it has to be one God. If there is a heaven in the universe, it has to be one heaven. There cannot be Muslim heaven, Hindu heaven, Christian, Buddhist, or Jain heaven. Friends, the power of negative people is not that great. But if good people are not active, the bad certainly will be, and their actions will cause society to suffer. Therefore, good people have to make a special effort to bring peace to this earth. And friends, needless to say, the audience in this Spirituality Mahotsav powerful, positive, and capable enough of bringing change to this world. So all need to remain awake, alert, and active to transform our world for the better. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. साध्वी शिलापी जी को एक बार जोरदार तालियां. थैंक यू और प्रणाम्स. It gives me great pleasure to welcome Pujya Bhai Shri Ramesh Bhai Oza ji, Raj Chandra Mission, who held his first discourse on the Bhagavata Purana at the age of 13 at Gangotri. At the age of 18, he held Bhagavata Purana reciting in central Mumbai. He also conducted numerous recitations across the world since then. Ladies and gentlemen, Pujya Bhai Shri Ramesh Bhai Oza ji. Om Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva Jadbadaran Tanna Asuva. Om Shanti Shanti Shanti. प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के समझदार लोगों ने विचार करना प्रारंभ किया कि यह संपूर्ण विश्व युद्ध से मुक्त कैसे हो सकता है, विश्व में शांति कायम कैसे हो सकती है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझदार लोगों का वो विचार एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में चरितार्थ हुआ, जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन.
उसके आमुख में ये लिखा गया कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मन से होता है। पहले युद्ध का बीज मनुष्य के मन में पनपता है और धीरे 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 जाकर के युद्ध में परिणत होता है। इसलिए यदि विश्व में शांति को कायम करना है तो हमें मनुष्य के मन पर ध्यान देना होगा, मनुष्य के मन पर काम करना होगा, और भारत के ऋषियों ने यही काम किया। जब तक व्यक्ति स्वयं भीतर से शांत नहीं होगा तब तक विश्व में शांति कायम नहीं हो सकती। और जहां व्यक्ति शांत हुआ, भगवत गीता की बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नचा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जब तक मन में अशांति है, व्यक्ति अशांत है, परिवार अशांत है, समाज अशांत है, अशांतस्य कुतः सुखम, तब तक व्यक्ति, परिवार और समाज के जीवन में सुख नहीं हो सकता। और प्रत्येक प्राणी अपने लिए सुख की ही इच्छा करता है, दुख कोई नहीं चाहता। सुखम में भूयात दुखम में मां भूत, यही सबकी कामना है। अतः वह शांति यदि कायम करनी है, व्यक्ति से शुरुआत करना होगा और व्यक्ति को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में संवादिता को कायम करना होगा। हमारे यहाँ एक श्लोक में कहा गया है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यद वचस्यन्यद, मन, वचन और कर्म में जहां पार्थक्य है वो दुरात्मा है, और उसमें जहां संवादिता है, ऐक्य है, वो महात्मा है। हमें अपने मन की भावनाओं, बुद्धि के विचारों और हमारे इंद्रिय के व्यवहारों में एक संवादिता कायम करना पड़ेगा। और उस संवादिता के लिए चाहे व्यक्ति के जीवन की वैयक्तिक संवादिता हो, चाहे पारिवारिक संवादिता हो, चाहे राष्ट्र में संवादिता की हम बात कर रहे हो, उसके लिए संवाद आवश्यक है। आज अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति के खुद के जीवन में भी संवाद का उसको अवसर ही नहीं मिलता या टाइम ही नहीं है। परिवार में संवाद टूट रहा है और यही कारण है कि परिवार टूट रहा है। व्यक्ति के अपने जीवन में संवाद नहीं हो पा रहा है, इसलिए व्यक्ति भीतर से टूट रहा है और जो टूटा हुआ है वो तोड़ने का काम करेगा। हमारे पुराणों में देव और दानव की जो बात है, दानव उसको कहते हैं जो टूटा हुआ है और तोड़ने पे लगा हुआ है। दिंग क्षय दो अवखंडने, इस तरह से संस्कृत भाषा में उससे दैत्य शब्द निष्पन्न होता है। अतः वो देवत्व कायम करना है तो व्यक्ति के, समाज के, परिवार के जीवन में संवादिता का कायम करना ये बहुत अनिवार्य है और उसके लिए संवाद की आवश्यकता है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे इस संस्था में आदरणीय दाजी ने और भारत की कल्चरल मिनिस्ट्री ने मिलकर के एक ऐसे संवाद का मंच तैयार किया है जहां सभी धर्मों के सब लोग परस्पर मिलकर के संवाद करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे। यहाँ बोलने से भी ज़्यादा सुनना ज़्यादा आवश्यक है। भगवान वेदव्यास जी ने एक जगह कहा है, न कश्चित शृणोति में। व्यास जी को भी ये शिकायत रही कि कोई सुनता नहीं है। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। सुनना एक कला है और अटेंटिवली सुनना, इट्स नॉट ओनली हियरिंग, इट्स लिसनिंग। एक एक शब्द को ध्यान से सुने और समझे। समझदारी बिना संवादिता के संभव नहीं है और समझदारी के बिना वह शांति, वह संवादिता संभव नहीं है। अतः हमारे व्यावहारिक जीवन में, फिर हमारा वैयक्तिक जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो या वैश्विक जीवन हो, उसमें शांति को कायम करना है तो यह संवाद, यह संवादिता, ये वाली हार्मनी बहुत आवश्यक है। हम इस शांति के द्वारा, वैयक्तिक शांति के द्वारा वैश्विक शांति की यात्रा करने की बात कर रहे हैं। वेदों में प्रार्थना है,
द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, ओखधय शांति। हमारा यह पार्थिव शरीर, पांच भौतिक शरीर, इसमें भी पृथ्वी है, जल है, आपः शांति, पृथ्वी शांति, इसमें तेज है, वो तेज अग्नि वो शांत हो, वायु शांत हो, और हमारे भीतर आकाश भी है वो भी शांत हो। ये पांचों महाभूत जब शांत होते हैं, हमारे ऋषियों के जीवन में, हमारे संतों के जीवन में हमने ये दर्शन किया है। उनके जीवन में जो शांति है, उसके चलते जहां शांति है व्यक्ति के जीवन में, उसका पूरा आसपास का जो वातावरण है उससे प्रभावित हुए बगैर रहेगा नहीं। गुजराती में हमारे यहाँ एक भजन है, और उस भजन की पहली पंक्ति है, बोले संत किसको कहते हैं? बोले शांति पमाड़े एने संत कहिए। क्या व्याख्या है सीधी सादी। जिसके पास बैठने से तुम्हें शांति का अनुभव हो, वही संत पुरुष है। यहां आकर के दाजी के आसपास बैठने से वो संतत्व कोई वेशभूषा के अधीन नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व के पास बैठने से जहां शांति का अनुभव हो, वह संत है। श्रीमद् भागवत में, क्योंकि मैं भागवतकार हूं, भागवत की कथा, भागवत मेरा विषय है, भागवत मेरा विश्वास है, भागवत ही मेरी साधना आराधना है। सांख्य योगाचार्य भगवान कपिल श्रीमद् भागवत में माँ देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि माँ, ऐसी शांति का अनुभव कराने वाले उन संतों की शरण में जाओ, उनके पास बैठो, उनको सुनो, और उन संतों का लक्षण क्या है, उन संतों का परिचय क्या है, ये बतलाते हुए कहा, अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। शांताः, जो अजात शत्रु है, जो शांत है। कौन है शांत? जो प्रतिकूलता में भी न उग्र होता है न व्यग्र होता है। उग्रता और व्यग्रता ये दोनों अशांति का रूप है। बाह्य अशांति को उग्रता कहते हैं और भीतर की अशांति को व्यग्रता कहते हैं। कभी कभी आदमी उग्र नहीं होता, शांत दिखता है, क्रोध नहीं किया, लेकिन भीतर ही भीतर व्यग्र होता है। बाप ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, बेटा कुछ बोल नहीं पाता। बाप के सामने क्रोध करना वो अविवेक है, उसकी मर्यादा उसको रोकती है, लेकिन भीतर से तो वो व्यग्र है। कभी पति ने कुछ कह दिया और पत्नी कुछ बोलती नहीं, आजकल तो बोलती है, बोलने का अधिकार भी है, लेकिन यदि कुछ बोले नहीं तो भीतर से तो वो व्यग्र है ही है, भीतर से वो अशांत है, और भीतर की वह अशांति आज नहीं तो कल कहीं न कहीं उसके व्यवहार में प्रकट होकर के रहेगी। अतः शांत वो है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी न उग्र होता है न व्यग्र होता है, और उसके लिए व्यक्ति को अपने से संवाद करना ये बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरा रामचरितमानस स्वयं से संवाद है। तुलसीदास जी ने अपने मन को ही सुनाया है, दुनिया को नहीं। तुलसीदास जी ने अपने मन से जो संवाद किया, उस संवाद को रामचरितमानस में पूरी दुनिया देख रही है, पढ़ रही है, सुन रही है, समझने की चेष्टा कर रही है। पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना। वो अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। ध्यान, ये अपने आप को संबोधित करने से शुरुआत करके धीरे 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 हायर स्टेज पर पहुंचने की बात है। हम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, वेदों का यह जो मंत्र है हमारे अपने जीवन में चरितार्थ हो, और व्यक्तिगत शांति से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक शांति की यात्रा चरितार्थ हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी, मैंने यहाँ आया, मैं कल तो संकुल में एक वाक्य पढ़ा, देखा मैंने कि स्पीच इज गुड बट साइलेंस इज बेटर। सो आई कंक्लूड माई स्पीच। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी. May I now request Yogi Niranjan Nath ji, who follows Sant Dhyaneshwar ji's life and writings, which has developed into primary exemplars of genuine religiosity for the Varkari movement, as well as crucial sources and focal points of bhakti devotion. Ladies and gentlemen, Yogi Niranjan Nath ji from Sant Dhyaneshwar Maharaj Sansthan. अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र जिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठवीता महापुण्य राशि नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासे. जहां पर जिसकी वाणी से ईश भी रमता है उन रमेश भाई के चरणों में वंदन करता हूं. आप सभी महानुभावों को त्रिवार वंदन करता हूं तथा जिनकी पुण्य प्राप्ति की वजह से, जिनकी भक्ति की वजह से, जिनकी त्याग की वजह से, जिनकी तपस्या के कारण हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे दाजी के सभी बालकों को भी वंदन करता हूँ. हमें आज भी तंत्र ज्ञान का बड़ा महत्व बताया जाता है. तंत्र और ज्ञान दो विचित्र शब्द हैं. उसको अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहेंगे. तीन मुख्य बातें होती है, तंत्र, यंत्र और मंत्र. उसमें से तंत्र और ज्ञान ये दोनों शाखाएं विलग करते हैं. तो पहले के ज़माने में ऐसा था, एजी, ओजी, फिर आ गया 2G, फिर वहाँ से उसकी प्रगति हुई, वो हो गया 3G, फिर 4G और 5G. अब ये 5G थोड़ा सोशल मीडिया में घुस गया तो लोग कहते हैं कि वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, मॉलेस्टेड बाय द सोशल मीडिया. और हम जब इस सेशन में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, साधु संतों के साथ समागम में आते हैं, तो मुझे लगता है 2G, 3G, 4G, 5G नहीं, दाजी की जरूरत होती है, गुरु जी की जरूरत होती है. और देखिए कितनी सुंदर बात है भाई श्री, हम भी भक्ति संप्रदाय के आपकी बालक हैं. हम ज्ञानेश्वर महाराज जी की धरती से आते हैं, भगवान विट्ठल का स्मरण करते हैं, हम वारी करते हैं हर साल. विश्व की सबसे बड़ी पैदल यात्रा कहीं अगर होती होगी, आपको शायद पता हो ना हो, मैं उस यात्रा का प्रतिनिधित्व करता हूं भक्त बनकर. और इसका एक छोटा सा संस्करण आपको दिखाते हैं. ये जो यात्रा चल रही है बड़ी सीमित प्रकार की है. आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी यात्रा तो कितनी बड़ी होगी. तो हर साल आषाढ़ के महीने में महाराष्ट्र में वी कैन जॉइन देम बाय क्लैपिंग नाउ. ज्ञानवा तुकाराम, ज्ञानोबा 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 तुकाराम, जागे हो, ज्ञानोबा तुकाराम को सुने. ज्ञानोबा तुकाराम, होते हैं, ज्ञानोबा कुछ ध्यान तुकाराम, आंखें बंद करके किया जाता ज्ञानोबा है, तुकाराम, कुछ ध्यान ज्ञानोबा तुकाराम, आंखें खुली रखकर किया ज्ञानोबा जाता है. तुकाराम,
कुछ ध्यान में ज्ञानो एक जगह बा आसन तुकाराम, लगाकर बैठना पड़ता है ज्ञानो बा और तुकाराम, कुछ ध्यानों में ज्ञानो बा आपको तुकाराम, इस तरह से हाँ हाँ, नाचना ज्ञानो पड़ता बा है। तुकाराम, ज्ञानो बा 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 तुकाराम, ओ ज्ञानो बा। मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि वर्ष में आषाढ़ के महीने में वारकरी संप्रदाय सभी भक्त जिनको वारकरी कहते हैं उनका ये गणवेश होता है। भाई श्री महाराज आपको विदित है सब। ये आलंदी से निकलते हैं तथा देवू से निकलते हैं और ये जाते हैं पंढरपुर भगवान विट्ठल के दर्शन को। द एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आलंदी टू पंढरपुर और डेहू टू पंढरपुर इज नियर अबाउट 230 किलोमीटर्स। We hold the biggest procession, barefoot procession in the entire world. हम 19 दिन तक के यात्रा करते हैं, हर रोज 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं। हम रोज एक विश्व को निर्माण करते हैं तंबू लगाकर। लगभग 16 लाख लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। ये 16 लाख लोग 19 दिन में 16 विविध प्रकार के ग्रामों में रुकते हैं। रात को खाना पकाते हैं, प्रसादी लगाते हैं, भोग मिटाने के लिए भगवान का भोग ग्रहण करते हैं और दूसरे दिन सुबह फिर से 4 बजे जितने तंबू लगाए थे, जितनी व्यवस्थाएं की थी, सब निस्तो नाबूद करते हैं, क्लोज करते हैं और नया एक जीवन शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी भी ऊपर से देखते होंगे कि मैं हर बार विष्णु की नाभि से निकलकर विश्व की निर्मित करता हूं और प्रलय के काल में वो संचलित संपन्न हो जाती है। वारे वाह विट्ठल भगवान, वारे वाह ज्ञानेश्वर जी महाराज, वारे वाह तुकाराम जी महाराज। आपने तो इस बहाने से भक्ति संप्रदाय में लोगों को डेमो दिखा दिया कि कैसे विश्व की उत्पत्ति होती है और कैसा विश्व लय में जाता है, फिर भी भक्ति निरंतर रहती है। मैं सोचता हूं मेरी दृष्टि थोड़ी अलग है, आप सभी की कृपा से, आप संतों के समागम से। महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय है, भक्ति परंपरा है, उसमें एक विशेषता ऐसी है, उसको कबीर जी महाराज का दोहा भी देता हूं, प्रांतीय भेद ना हो। हमारे यहाँ हम ज्ञानेश्वर जी को मानते, तुकाराम जी को मानते हैं। हम 16 लाख लोग लेके जाते हैं आषाढ़ी में। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट का प्रकार होता है, ऐसा कभी जीवन में नहीं होता। किंतु ये सक्सेसफुल क्यों है? व्हाट इज द सक्सेस की टू मैनेज that much of chaos? The reason behind this, जो आज का सब्जेक्ट है, मैं उस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ रहा हूं। मेरी माता, हम सिस्टर नहीं कहते, हम माता कह लेते हैं, क्योंकि माता कभी गुस्सा नहीं करेगी, घंटी नहीं बजाएगी। सिस्टर बोल देगी कि भैया आपको समझता ही नहीं है, ठीक है चलो सब्जेक्ट पे आते हैं। तो इतने 16 लाख लोगों को अच्छी तरह से रोज भोजन करवाना है, नाश्ता करवाना है, भजन भी गाने हैं, अपनी एकादशी का उपवास भी रखना है। दूसरे दिन द्वादशी को विष्णु भगवान का द्वादशी विष्णु जी की है, एकादशी विष्णु जी की नहीं है। तो ये सब करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? उसका कारण आज का सब्जेक्ट है। देखिए, वक्ता जो होता है उसके हाव भाव से पता चलता है। तो मेरे हाव भाव से आप अंदाजा मत लगा दीजिए, कभी कभी गलत भी हो सकता है। I speak joyfully because I am in joy by the grace of my Guru. That is why I say, when you say G is equal to genius, G is equal to glucose, I deny it. I say G is equal to Guru Ji again. माझे हृदय सदगुरु जिन्हें तारीला भवसागरु। महाराज जी, भाई श्री, आपके चरणों में एक शब्द विदित करता हूं। हमें विवेक नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। यहां पर 6 पेटल्स है, 6 डोम्स है, आप पीछे देख सकते हो, चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। मैं ऐसा समझता हूं कि सनातन धर्म में जो 6 स्कूल ऑफ थॉट्स कहा जाता है, वेदांत, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये वो 6 डोम है। और ये 6 डोम, ये 6 पेटल्स अलग अलग प्रकार से हिंदुत्व की परिभाषा करते हैं, सनातन को उद्धृत करते हैं, विवरित करते हैं,
प्रकट करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस मंच पर दाजी आते हैं, गुरु जी आते हैं, भाई जी आते हैं, ये सभी 6 पेटल उसमें एकत्रित होके वही पुष्प कमल निर्मित होता है जो कमलेश दाजी नाम के विष्णु के नाभि से निकलता है। और यहां पर हार्टफुलनेस नाम का एक ब्रह्मांड उस ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। ये सब गुरु कृपा है। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए होगी तो मेरे ख्याल से एक ही काम करो, समर्पण की भावना रखो, सरेंडर हो जाओ। तो वो किस में? तो हमने कभी भगवान को देखा नहीं महाराज। हम 16 लाख लोग लेके यहाँ से वहाँ जाते हैं, 225 किलोमीटर, 19 दिन रोज तंबू लगाते हैं, सुबह उसको निकाल देते। घंटी बज गई महाराज जी, बोलिए सियावर रामचंद्र की। विचलित नहीं होना है घंटी बजने के बाद भगवान का नाम लेना। इसी का तो लेक्चर चालू है कि जब भी कोई विपदा आए ना तो हनुमान जी का नाम लीजिए। हनुमान जी का नाम क्यों? तो बोले हनुमान जी, जब राम जी को भी विपदा पड़ी थी तो हनुमान जी को कॉल किया था। तो हनुमान जी क्यों? तो हनुमान जी गुरु है। गुरु कैसे? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जब वेदों को पूछा गया आपने इतना ज्ञान सम्मिलित है, आप इतने ज्ञानी हैं, तो ये ज्ञान आपने किससे लिया? तो वेद करते हैं गुरुम शंकर रूपिणीम। तो हम सब कितने नसीबवान होंगे कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब भी गुरु की पूजा होती है, जब भी सदगुरुनाथ जी को हम वंदन करते हैं, तो वो साक्षात शंकर रूप में पूजनीय होते हैं। और हमें अगर डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है तो इस गुरु रूपी शंकर के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने भाव समर्पित कर दो। क्यों? आपके जीवन में साधना का जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन चलेगा तो सबसे पहले अमृत नहीं निकलने वाला है, हलाहल निकलने वाला है, विष निकलने वाला है। और जब आप इस गुरु रूपी शंकर को समर्पित हो जाएंगे तो मेरी गारंटी है महाराज जी, मैं भी एक गुरु का चेला हूं, इसी की वजह से तो यहाँ खड़ा हूं। मेरी गारंटी है कि जिस समय आपके जीवन में भक्ति प्राप्ति के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन होगा तो निकलने वाला जो विष है ये आपके गुरु रूपी शंकर भगवान सहजता से प्राशित कर लेंगे। भाई श्री ने निवेदन कर दिया तो मैं समझता हूं कि भाई श्री के रूप में मेरे गुरुजी खुश हो गए। तो बस एक सेकंड ऐसा बोलते मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। माँ, मैं आपसे सभी से एक प्रार्थना करता हूं फिर से। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हमने भगवान कभी देखा नहीं, भाई श्री माफ कीजिएगा, आप भागवत, प्रत्यक्ष भागवत हो हमारे लिए, किंतु इस जीवन में भगवान मिले ना मिले, गुरु कृपा अगर मिल गई तो हम भगवान से भी कहते हैं कि देखिए आपको दर्शन देना है तो आप इस वक्त बांसुरी मत लेके आइएगा, आप जटा डाल के मत आइएगा, आप नागपाश गले की रुंड की माला मत पहन के आइएगा। आप अगर आना है ना तो दाजी के रूप में ही आना, क्योंकि आपसे जो कनेक्टिविटी लगी है ना महाराज जी, भगवान आप जो यहाँ पे आए हो ना, मुझे पता है मेरे लिए आए हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कहीं तो भी मेरी बात मेरे गुरुजी ने आपसे कही होगी कि बालक को दर्शन दे देना, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। जिस दिन आपके श्वास में गुरु की भक्ति प्रेषित हो जाएगी, उसी दिन आप कह सकते हो कि मैं विश्वास कर सकता हूं। जब भी आप सोचेंगे कि मेरा श्वास एक्सहेल एंड इनहेल ये सिर्फ श्वास नहीं है, प्राण हो जाए, तभी आपके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी। डेली लाइफ में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस अगर करनी है तो एक ही बड़ा कान मंत्र दे के जाता हूं, और वो है गुरु के प्रति शरणागति। जिस दिन गुरु और शिष्य एक हो गए, विचारों की द्वैत भावना खत्म हो गई और गुरु एक ही अद्वैत में स्थापित हो गए, मेरे ख्याल से उस दिन आपको शिव शंकर का डमरू, भगवान कृष्ण की बांसुरी और सभी साधुओं से वेद मंत्र उन्हीं के मुख से सिखाई पड़ेंगे। देयर विल बी नो contradictions, no complaints, no comparison in your life. I believe so, and I believe whenever you are on that particular stage, when you come across this stage, this is the real definition of enlightenment, जहां पर आपका बेस आपके सदगुरु भगवान हो सकते हैं। मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अंग्रेजी के कल्चर को चराचर तक पहुंचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो ये
सुंदर प्रयास किया। और इसमें और एक निवेदित की बात यह है कि इनका कौतुक इसलिए करना चाहिए कि इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित भी किया। तो जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर हमारा संवाद है, आपने गुरु के सानिध्य में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। सही में ये सनातन भारत की संस्कृति है, जो हमारे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, भाई श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। सियावल रामचंद्र के। धन्यवाद योगी जी और प्रणाम्स. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's an honor to now invite Dr. Jayanti Ravi, IAS from Auroville Foundation, a scientist, civil servant, performing vocalist, administrator, thinker, and widely traveled development practitioner. Dr. Jayanti Ravi entails realms of experience in her multifaceted career. Passion for human development and service to humanity best describes her mission. Ladies and gentlemen, Dr. Jayanti Ravi, IAS. Namaskar. Greetings. Vanakkam. Bonjour, as we say from Auroville. मैं ऑरोविल से का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, वहाँ से आई हूँ। और यहाँ जितने भी हमारे महानुभाव बैठे हैं, माननीय गुरुगण बैठे हैं, उन सबको, और सामने जितने भी भक्तगण बैठे हैं, आप सबके चरणारविंद में मेरा नमन करना चाहती हूँ. Namaste. Since I come from Auroville, I would like to start with a small rendition of the Sri Aurobindo Gayatri. ये श्री अरबिंदो जी की गायत्री है, जिसमें उन्होंने आह्वान किया है सत्य का, कि वो हमारे जितने भी डायमेंशंस हैं, परिमाण हैं, उस सब को इल्यूमिन करें, उसको दैदीप्यमान करें. तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्. ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्. आज ये जो बहुत ही भव्यादि भव्य ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव की एक परिकल्पना हमारी सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो की है, और यहाँ जो कान्हा शांति वनम में हार्टफुलनेस संस्था के संयुक्त उपक्रम में ये जो हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही एक आनंद और गर्व की बात है. आई वॉन्ट टू ऐड that in the various illuminaries, great sons of Bharat that India has produced, one of the great icons, as we all know, has been Sri Aurobindo. और महर्षि अरविंद, देखा जाए कि अब भारत जिस बहुत ही एक वेरी वेरी रोमांचक जिस मोड़ पे अभी जा रहा है, कि जिसमें एक विश्व गुरु की तरह सिर्फ बात नहीं पर अपने आप को प्रस्थापित करने जा रहा है इन दिस जर्नी टुवर्ड्स द नेक्स्ट 25 years, टुवर्ड्स द अमृत महोत्सव of India's independence. It is a matter of pride that Sri Aurobindo is somebody who can really be thought of as a mascot, a champion of this entire journey. 15 अगस्त 1947 में
1947 उन्होंने he gave 5 dreams and it was not a coincidence. In his humility he says it's a coincidence, it's not a mere coincidence कि उसी दिन भारत को भी आज़ादी मिली and that was also his 75th birthday. And he spoke of the 5 dreams that he had. The first dream was of a free and united India. Of course, India had got freedom, but true freedom, as has been told, आज हम सब ने जिस तरह से सवेरे भी हमने सुना कि सही जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, हमारे अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर जो एंगर, गुस्सा, क्रोध, लोभ, ग्रीड, एनवी, जेलसी, ये सब जो हैं, इन सब भावों से हमें अपने आप को ऊपर, इस सब के ऊपर उठाना है. And similarly, the second dream was of a resurgent Asia. The third dream, क्योंकि श्री अरविंद, क्योंकि आज हम रोज़मर्रा के जीवन में आध्यात्मिकता, spirituality का क्या, how do we bring in spirituality in our daily life? तो श्री अरविंदो की ये जो 5 सपने हैं, the third that he spoke of, he was a great thorough rationalist too. मैं कहूँगी कि बिल्कुल वो एक तर्कवादी भी थे. But he realized the limits of rationality and he realized that pure rationality cannot really take us. If that was the case, आज इतनी प्रगति होने के बावजूद, why is it that there are so many conflicts? When there's enough food for everybody, why is it that we still have starvation? Why is it that there's still poverty in spite of the best forms of governance across the world, across the nations? So it means that the intellect alone cannot be a solution to the problems. So he really spoke about breaking that ceiling and moving to the next level. And he gave us 3 words: faith, sincerity, and surrender. And on faith, that is where he talks of integral yoga and says all can be done if the God touch is there. दिव्यता का स्पर्श, भगवान का स्पर्श अगर हो तो सब कुछ हो सकता है, संभव है. और उस एक आह्वान के साथ उनकी जो आध्यात्मिक सहयोगिनी श्री माँ, द मदर, उन्होंने एक बहुत ही भव्य शहर की स्थापना की थी 56 वर्षों के पहले, called Auroville, the city of future, the city of dawn. It's also called Usha Nagari and named after Sri Aurobindo. It's a place, again, if we look at this concept of Sanatana Dharma, this divyata, this concept of the divinity that is inherent, present in every body, in every creature, in every part of this nature, physical and which is living. The inherent unity, so it's not a conditional unity. And अगर इस चीज़ को देखा जाए तो सिर्फ उन्होंने एक पेट्रियाटिज्म जो अपने देश के लिए प्रेम है उससे भी ऊंचा उठकर nationalism, when you love your country because of an ideology, and the ideology of India is her spiritual identity, एक विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान, वो हमारा हस्ताक्षर है भारत का, आध्यात्मिकता, और उससे भी अगर ऊंचे जाएं, he talks of internationalism, when that signature crosses and breaks boundaries of the world, because वही दिव्य चेतना हम हर एक में देखते हैं, beyond caste, creed, religion, color, national boundaries. It's that same divinity in everybody, everyone. Of course, to reach there, the journey is one of sincerity with challenges in the way. And we often have to also invoke various things. And there's a very beautiful story that I want to quickly share. बहुत साल पहले एक छोटा सा लड़का था और एक बहुत ही रईस परिवार से आने की वजह उसकी माँ को चिंता होती थी कि ये लड़का कहीं अय्याशी में और जो दौलत के साथ और बहुत ही जब सफलता मिलती है एक आयाम पर तो बिगड़ जाने की एक संभावना रहती है. तो माँ की इच्छा थी कि लड़का बिल्कुल अच्छे इसमें होनहार बने, अच्छे गुण रहें. तो रोज़ जब वो प्रार्थना करता था, इबादत करता था, तो एक छोटी सी शक्कर, एक टुकड़ा शक्कर का वहाँ रख देती थी और कहती थी जब वो आँख बंद करके आँख इबादत करके खोलता था तो वो शक्कर उसे मिलता था, चाहे हम इसे प्रलोभन ही क्यों न समझें. बहुत सालों तक ये सिलसिला चला रहा और एक ऐसा दिन आया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, अब एक युवान लड़का था
और उस दिन उसने जब अपनी प्रार्थना की, इबादत की, उपासना की, तो कुछ संजोग ऐसे थे कि माँ वो शक्कर का जो टुकड़ा था उससे चुपचाप जाके वहाँ पर छुपा के रख न सकी। और माँ के मन में भी एक चिंता उठती है और जो परवरदिगार है उससे बहुत एक आतुरता से प्रार्थना करती है, कुछ भी कर, लेकिन इसकी जो तुम पर श्रद्धा है उसे तोड़ने न देना, टूटने न देना, क्योंकि ये जो भी हुआ है वो एक छोटा बालक है, श्रद्धा से करता आया है। और उस दिन जब प्रार्थना करके ये बच्चा उठता है, ये जो नौजवान लड़का उठता है, उसके आंखों में एक नया एक लाइट, एक नूर था। अपनी माँ की तरफ जाते हुए कहता है, शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो माजा दूध सब बे वस्तु मिठियाँ लेकिन रब ने पूछन तुद। मतलब आज जो मैंने मिठास पाई, आज जो मैंने दिव्यता का एहसास किया, वो ये शक्कर, खंड, गुड़, ये सब मिठाई से कहीं ज़्यादा मीठा था। तो ये जो श्रद्धा जिसकी बात है, इनको फिर शक्करगंज भी नाम दिया गया है, बाबा फरीद कहते हैं। और इनकी जो ये कृतियाँ हैं गुरु ग्रंथ साहब में भी। सो श्री अरबिंदो spoke of this faith, this shraddha, which has to be inculcated in our daily lives as a mother, as a child, as a teacher, as a sister, as a brother, in every possible way. And then, of course, his spiritual collaborator, the mother, founded Auroville, and this journey of 56 years old is going on. And we are in the process of really trying to create a city exactly as she had envisioned. She never compromised for mediocrity. She got perhaps the best architect and town planner of the world at that point of time and got the city designed. आज भी इसकी जो पूरी मॉडल है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में भी मिलता है, सेंट्रे द पोम्पाडू पेरिस में भी है। और हम सब इस भव्य जो एक सिटी, एक नगर, जो एक दिव्य नगरी है, उषा नगरी है, जो भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है, इसकी अमलीकरण, इसको मूर्तिमंत करने के प्रयास में हम सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आप सबको हम न्योता देना चाहते हैं, आमंत्रण देना चाहते हैं कि प्लीज़ कम देयर एज विजिटर्स, volunteers, interns, to partner and be a part of this great journey forward. And as we move forward, माँ ने भी अपनी कार्यकाल में, इसकी जब स्थापना हुई 90, she was only 90 years young. And she left her body when she was 93 years young. But after that, we had several rounds of chaos, turbulence, as today morning, Gaur Gopal Das ji and all mentioned. Challenges are a part of life. और उसमें अक्सर राम की मंत्र हम लोग याद करते हैं, that whenever there is anything, an revolutionary idea ahead of its time, it is usually met with resistance, लेकिन अगर उसमें कुछ दम है, आइडिया में दिव्य चेतना से वो प्रेरित है, we should not give it up, we continue. The next stage may also invoke anger, rejection, anger, लेकिन तब भी इसमें compromise न करते हुए, if we proceed further, there is a stage, because it's the divine doing it and we're doing it with a sense of full surrender, samarpan to the divine. There is a mellowing and finally there is an acceptance of it, RAMA. और उसी भांति हम सब कोशिश कर रहे हैं. And Sri Aurobindo was also somebody who spanned so many languages. बचपन में उनके पिता, उनकी इच्छा थी कि भारतीयता की छत्र छाया भी उन पर न पड़े, इसीलिए उन्हें विदेश भेजा गया था पढ़ने के लिए. But when he came back with a vengeance, India, Bharat grew on him. He learned so many languages, including in Tamil. And in Tamil, he's done a lot of work even on the great saint. Today we had the Jeer who had come here, Ramanujachari, and another one such saint. I'll tell you a small story and end with this because it's about faith, sincerity, and surrender as the ingredients for daily life as we try and invoke and imbibe spirituality into everything we do, every breath we take. एक छोटी सी लड़की थी, there was this young girl, and she was absolutely besotted by her love for Sri Krishna, for the divine. And as she would see her father every morning in the early hours of the day pluck different flowers, all these beautiful flowers, make them into a garland to take and offer it as a garland to Sri Krishna. इनके मन में भी एक कुतूहल होता था. She would want to see how would it look on my beloved Krishna. And she would wear it and preen in front of the mirror
आईने के सामने खड़े रह के देखती थी कि मेरे कृष्ण पर कैसे ये जचेगा, और इस भावना के साथ उस माला को वहाँ रखती थी। अब उनके पिता जो मंदिर में एक बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त थे, नम्मालवार थे, जब ये हार लेके जाते थे उसमें एक केश उन्हें दिखने को मिला, और अंदर से उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैंने तो बहुत ही पवित्रता के साथ, एक बड़ी श्रद्धा के साथ ये हार बनाया था, तो एक तुच्छ, एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर जिसे कहते हैं, बाल की एक छोटी सी वन स्ट्रैंड, हाउ डिड इट कम देयर? 3-4 दिन जब उन्हें उसका कोई उकेल नहीं मिला, तो एक दिन वो छिपे छिपे देखते हैं कि हो क्या रहा है, और उनकी जो छोटी सी नन्ही सी बिटिया है वो ये माला पहन के एक कल्पना करती है कि मेरे कृष्ण पर कैसे लगेगा, और रखते हैं। उनको ज़रूर ठेस पहुंचता है कि मेरी बच्ची ने ऐसा एक काम किया जो सही नहीं है, ऐसे उन्हें एक चोट लगती है। बट दैट नाइट इन हिज ड्रीम श्री कृष्ण कम्स एंड सेज, दिस शी इज़ माई बिगेस्ट डेवोटी, मेरी परम भक्त है आंडाल, और इसने जो एक बिल्कुल निर्मलता के साथ ये जो किया है, मेरी भक्ति का एक प्रतिबिंबित एक एक्शन है उसका, और ये कोई बिल्कुल तुच्छ नहीं है। तो इससे हम देखते हैं कि अगर भक्ति समथिंग एज कंसिडर्ड एक तुच्छ वस्तु, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, जो घृणा के, अक्सर हमारी एक फ्रेंड है जो लंदन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल हाइजीन में डिस्गस्टोलॉजी में उन्होंने काम किया है, कहती हैं कि सभी सभ्यताओं में अक्रॉस सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड सर्टन ऑब्जेक्ट्स इवोक डिस्गस्ट, जैसे अगर a strand of hair is considered disgusting across civilizations, लेकिन उसमें भी ताकत है कि अगर भक्ति से भरा हो तो भगवान को बिल्कुल अपनी तरह झुका सकती है। तो ये आंडाल जो हमारी एक, she was the first, she again broke ceilings, the lady saint भक्ति मूवमेंट की जो प्रणेता थी, this is also something that Sri Aurobindo has celebrated। तो हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, if we follow this mantra of faith, sincerity and surrender in every aspect, we use this like a sprinkling of salt and sugar and spice in everything that we do, action small and big, we can definitely move closer and closer and be anchored in the divine, no matter what the setbacks are, what the challenges are, what the difficulties are। फिर से दाजी को, कल्चर मिनिस्ट्री को और आप सबको मेरा प्रणाम कहते हुए और मेरा धन्यवाद कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, वणक्कम। Thank you, Dr. Jayanti Ravi ji. Thank you very much, और धन्यवाद। Ladies and gentlemen, our next speaker, Master Ji, Shri Rajesh Kumar ji. God Home Journey. Master Ji is a highly revered spiritual master and life guide who has revolutionized the lives of thousands of individuals. हरिओम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मंच पर उपस्थित धर्मगुरु और इस स्पिरिचुअल महोत्सव में आए सभी धर्मगुरु, साधक साधिकाएं, सेवक सेविकाएं और इस पूरे जो आयोजन का परमात्मा से जो प्रेरणा मिली, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ये सारा प्रबंधन दाजी द्वारा, जो हार्टफुलनेस, ये सब पूरा का पूरा जो खेल है, जो निराकार हो गए परमात्मा जिनको हम भगवान कहते हैं, कोई श्री राम कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई महावीर, कोई जीसस, कोई मोहम्मद, कोई कबीर, कोई फरीद, कोई गुरु नानक देव, कोई राम परमहंस, कोई साईं बाबा, कोई मीराबाई, कोई सहजोबाई, कोई लल्लाबाई, कोई लाउजू, कोई सुगरात, कोई संत नामदेव, कोई संत ज्ञानेश्वर एंड सो ऑन। कितने ही नाम हमने लिए संसार में आज तक,
आज हम इनको भगवान कहते हैं, कोई भगवान का मैसेंजर कहते हैं, कोई भगवान का बेटा कह रहा है। पर ये संसार में अगर हम इस युग में देखें, जहाँ आज हम कहते हैं कि 2024 2500 साल पहले इस युग में बुद्ध महावीर आते हैं, जीसस आते हैं 2000 साल पहले, 1700 साल पहले मोहम्मद, और ऐसे ही सभी लोग संसार में आए। अगर हम इस युग की बात करें, जिसको हम आज कलयुग कहते हैं, ये सब लोग आपके और हमारे जैसे किसी देह से जन्म लिया था, जन्म। और हमारे जैसे आज जैसे हम हैं, कल हमारे शरीर की मृत्यु होगी, इनकी भी मृत्यु हुई। इनके जीवन में कहीं कोई लिखा है डे ऑफ एनलाइटनमेंट, कहीं गुरु नानक देव कहते हैं उसको सचियार, जिसको बुद्ध कहते हैं निर्वाण, महावीर कहते हैं केवल्य, कृष्ण भगवान कहते हैं स्थिति प्रज्ञा। ये सब शब्द जो संसार में आए, ये इन्होंने सिद्ध किया संसार में कि हम वो नहीं हैं जो हम अपने को मान बैठे हैं। हम हैं कौन? आज यहाँ जो उन्हीं निराकार से प्रेरणा मिली, और इस भारत की भूमि पर जहाँ इतने सतगुरु हुए, सतगुरु स्पिरिचुअल मास्टर्स, जिसको आज हम बुद्धा भगवान कह रहे हैं, महावीर भगवान कह रहे हैं, गुरु नानक देव, साईं बाबा, राम परमांश भगवान, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई भक्तजन कह रहे हैं, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर भगवान कह रहे हैं। ये इस धरती पर हुए, इन्होंने क्या किया? क्या? कोई पोर्टफोलियो था इनके पास? यहाँ कोई पढ़ाई की थी बहुत? कोई बिजनेसमैन थे? बुद्ध, महावीर, मीराबाई महलों में रहते थे, पर वो बाहर समाज में आए, भिक्षा मांगी। बुद्ध महावीर ने भिक्षा मांगी, साईं बाबा ने भिक्षा मांगी। क्यों? क्योंकि ये संसार को दिखाने के लिए कि भगवता को पाने के लिए दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, संसार में कोई आकर्षण नहीं चाहिए। पर हम क्या चाह रहे हैं? हम पिछले युगों में भी जाते हैं तो हम श्री राम कहते हैं, श्री राम भगवान। तो क्या श्री राम भगवान के अंदर जो भक्त हनुमान हैं, हनुमान क्या किया? हनुमान जी की कथा क्या कहती है कि अंदर श्वास श्वास में राम चलते हैं। जब अयोध्या में जाकर माला मिली नवरत्नों की, तो माला फेंक दी। क्यों फेंकी? क्योंकि इसमें राम नहीं है, हनुमान जी कहते हैं। कहते हैं भाई देह में राम है, मजाक किया। कहते हैं देह में श्वास श्वास में राम है, और हमने देखा कि वो राम जी की मूरत। पर हम क्या मांग रहे हैं हनुमान जी से? हम क्या मांग रहे हैं राम जी से? वो नवरत्नों की माला दे दो जो फेंकी है। भक्ति नहीं कि हर पल अंदर श्री राम चलें। जीवन का ये खेल हम समझ नहीं रहे। आज दाजी द्वारा निराकार की प्रेरणा से इस शताब्दी में, पिछले 100 साल के अंदर पहली बार कोई सतयुग का बीज इस भारत की भूमि पर डाला जा रहा है। और ये बीज क्या है कि तू ये जो अपने शरीर को कुछ समझ बैठा है कि मैं सेठ हूं बहुत बड़ा, मैं मिनिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये अपने को जरा समझ कि तू कुछ भी नहीं है। सिर का बाल, तेरी आंख, तेरा कान, तेरा मुंह, तेरा नाक, तेरा दिमाग, यहाँ तक तू कहीं से खरीद के नहीं लाया कि तू बहुत इंटेलिजेंट है तो दिमाग तूने लंदन से खरीदा है और न्यूयॉर्क से तूने कुछ मंगवाया अलग से। सब कुछ तुझे मुफ्त में मिला है, इन द फ्री। कोई कारण होगा जिसने तुझे भेजा, कोई कारण होगा यहाँ आने का, जन्म का। इसको जन्म कहता है। माँ के गर्भ में एक ड्रॉप की तरह गया था तू, और माँ ने मिट्टी खाई, रोटी सब्जी फल, और फिर तू बाहर आया। आज मिट्टी खाकर अपने आप बड़ा हो रहा है। तू अपने को बड़ा नहीं कर रहा। ये दिमाग भी तेरा नहीं है। अंदर जो बैठी है ना वो शक्ति, आज जो हम सारा समय बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी,
स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग शायद नहीं मालूम होगा आपको अच्छी तरह से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक अनुभव है। स्पिरिचुअलिटी कोई किताब से नहीं समझ आएगी। स्पिरिचुअलिटी इज द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट द डूअर, जब तू कुछ करता नहीं है, तू सदा देखता है कि हो रहा है, इट इज हैपनिंग। जैसे शरीर में आंख अपने आप पलक झपकती है, कान अपने आप सुनता है, मुंह में निवाला डालता है, अपने आप खाता है, उठे पैर अपने आप चलते हैं, ऑटोमेटिक। ऐसे ही बाहर जब कोई कर्म तू करता है, कहा ना स्पिरिचुअलिटी एट वर्क इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में चाहे तू काम पर जा रहा है, चाहे तू जो है कहीं ऑफिस में जा रहा है, या कहीं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, या तू कुछ भी कर रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, एक्शन इन योर लाइफ is not by you, this is by your body, by the conscious inside, spirit, soul, energy, conscious. You are not the doer. तू कुछ भी नहीं है। जब तू कुछ भी नहीं है, then you are spiritual, क्योंकि स्पिरिट कर रही है सब कुछ। and that spirit is common in all the human being. स्पिरिट ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है, कबीरपंथी है, ना कोई अमेरिकन है, वो ना जापानीज, ना चाइनीज, ना इंडियन, वो एक ही है। सेम माँ की कोख से 9 महीने में सब ने एक सा जन्म लिया, और आखिरी में मौत के बाद उसी शमशान में और उसी ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। पता भी नहीं लगता कहाँ गए ये। वहाँ सेठ और भिखारी एक ही तरह जलते हैं, मिनिस्टर हो या चपड़ासी हो, एक ही जगह जलते हैं, और उसके बाद पता नहीं कहाँ गए, कहाँ गए। दैट इज वॉट ऑल सेड बाई ऑल दिस गॉडली पीपल बॉर्न ऑन दिस अर्थ, टू whom we say द गॉड एंड गॉड मैसेंजर और द गॉड सन, जिसको हम ग्रंथ कहते हैं। बुद्धा, धम्मपद, महावीर वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, ऑल उपनिषद, ये ग्रंथ क्या कह रहे हैं? कभी सुना, समझा, या बस आरती की तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन दिया तूने, अर्पण किया, अग्नि को साक्षी मानकर, तन में भार आए, कष्ट आए, रोता नहीं क्या? धन दिया, धन चला जाए, रोता नहीं क्या? मन में माया चलती है, मैं, मेरा मेरा मेरा, और कहता है अर्पण किया। भगवान के आगे तू झूठ बोलता है, तुझे मालूम नहीं है इसी का जो है मृत्यु के आगे कहीं प्रतिफल मिलता है क्या? यमदूत आते हैं लेने के लिए। टू द हेल यू गो। बाहर से तू अपने को सच्चा समझता है, अच्छा मानता है। मैं और मेरा, आई एंड माई इज नॉट योर्स। आउटसाइड टू प्ले द गेम विद दिस बॉडी, यू हैव बीन गिवन दिस ऑल। सो इस गेम को सिर्फ खेलना है, शरीर खेलने के लिए मिला है। राम लीला, कृष्ण लीला, तेरी भी लीला है, बुद्ध की लीला, महावीर लीला, जीसस लीला, गुरु नानक देव लीला, और संसार में आज संदेश देकर के भगवान हो गए। भगवता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आत्मा का दर्शन, स्पिरिट को एक्टिव मानना, एक्शन नॉट आई मेक्स यू गॉड। गॉडिज्म, गॉड क्या है? भगवान कौन है? एक तेरा ही सैचुरेशन, एवोल्यूशन। विज्ञान ने इवोल्यूशन किया शरीर का। डार्विन ने प्रूव किया यू आर कमिंग फ्रॉम द मंकी फैमिली। 99% डीएनए तेरा जो है मिलता है। एंड नेक्स्ट इवोल्यूशन इज गॉडिज्म। मनुष्य जन्म मिला है भगवता को पाने के लिए। और कब मिलेगा? जब तू मैं और मेरा को अंदर से बाहर करेगा। इट इज ऑल नॉट बाई मी बट बाई द क्रिएटर, दैट द सस्टेनर। मैं नहीं हूं, तू। तो एक ही शब्द है जीवन में, क्योंकि समय कम है। इस थोड़े से समय में क्यों मैं कह रहा हूं तेरे को? बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ। क्योंकि का स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि जो अपने मुख से बोले उसका अनुभव होना चाहिए। हिज एक्सपीरियंस। सो आई एक्सपीरियंस विच आई हैव एक्सपेरिमेंटेड फॉर लास्ट 16 years in my life and have come to the public for last 2 months. 2 महीने में आया, परमात्मा ने ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से आप तक सब तक संदेश पहुंचाने के लिए, क्योंकि हजारों पर एक्सपेरिमेंट किया। अज्ञान मैं और मेरा से अंदर तू गया, दुखी हुआ। ज्ञान से अंदर से मैं मेरा बाहर आएगा, जीवन फिर से मौज में आ जाएगा। जन्म के समय तू था परम आनंद में,
बाहर मैं मेरा आया, फिर परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा, नथिंग एल्स। सिर्फ ज्ञान जीवन का आ जाए तो फिर अंदर से मैं मेरा बाहर आ जाता है और ये जन्म अपने आप आनंद में आ जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड ब्लिस। सच्चिदानंद हो गया, स्पिरिट हो गया, स्पिरिचुअलिटी। जब तेरा अनुभव जो बोलेगा वो स्पिरिचुअलिटी जीवन को संदेश देगा। तो बस थोड़े शब्दों में ये जो कह सकता था आपको कि स्पिरिचुअलिटी जो आज ये यहाँ पर बीज डला है, कहीं दाजी द्वारा परमात्मा ने चुना है उनको, और ये सृष्टि के अंदर जैसे कलयुग में सतयुग की शुरुआत है और सबको अपने अंतरात्मा में झांकना है, आत्मा का ज्ञान लेना है। स्पिरिट इज योर ऑनर नॉट द बॉडी। अपनी आई और माई को बाहर करना है। अज्ञान से अंदर गई, ज्ञान से बाहर आएगी, जिससे कि जीवन अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद में आ जाएगा। फिर हम सच्चा महोत्सव मनाएंगे, सच्चा महोत्सव। और ये शुरुआत है इस धरती पर और ये महोत्सव चलते रहेंगे। इसलिए जीवन में सिर्फ अपने को पहचानो कि यू आर नॉट दिस डेड बॉडी बट द सोल, स्पिरिट। और उससे जीवन अपने आप अकर्ता और अकर्म भाव में आएगा। क्योंकि कहा गीता में ज्ञान योग, ज्ञान लिया तो फिर भक्ति आएगी, यानी मैं मिटेगी। भक्ति यानी मैं का मिटना है भक्ति। तो फिर अपने आप हम आत्म स्वरूप में प्रकट होंगे और ये हमारा जन्म हर जगह उस महोत्सव में आनंद लेगा, जिसमें कि आज ये लिखा गया ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव। और ये संयोग है 5000 साल पहले गीता में भी कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे। जब जब धर्म की गलानी होती है तब तक वो प्रकट होते हैं। यहाँ भी हमने कहा कान्हा यहीं पर जो सा है जगह का नाम शांति वना, शांति का संदेश देने कि अंदर से वन कर दो, अंदर से मैं मेरा को बाहर कर दो। पहले वानप्रस्थ कहते थे, अब वन नहीं रहे जाने को, गुरुकुल नहीं रहे। अंदर से वन कर दो, अंदर से मैं मेरा को बाहर करो और उस सत्य को, उस आनंद को प्राप्त करो और अपने इस जन्म को सफल करो। ओम हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी और प्रणाम। Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to call upon Right Honorable Patricia Scotland, Commonwealth Secretary General. She is a British diplomat, barrister and politician, serving as the 6th Secretary General of the Commonwealth of Nations. She was elected at the 2015 Commonwealth Heads of Government meeting and took office on 1st April 2016. She is the first woman to hold the post. Please put your hands together to Right Honorable Patricia Scotland. Namaste. Are you there? It is a great honor to be asked to participate in this most significant and seminal moment in our history. It would be easy to underestimate the enormity of the event in which we now participate. For Daaji to have brought together so many sages, so many faith leaders across the globe to this special, spirit-filled place is a matter and a moment which we should all celebrate. Some have asked me, Secretary General, why have you come? Why are you here at this moment? And there is a clear answer. The Commonwealth, as you know, is made up of 2.5 billion people.
30% of whom are under the age of 30. And 1.4 billion of my 2.5 billion people in the Commonwealth, making up 1/3 of humanity in toto, 1.5 billion of them live here in India. India's richness, her spirituality, has been present in our world, influencing, enriching, changing it for millennia. But India also represents all faiths in the world. And our Commonwealth of 2.5 billion people have within our number every faith on this planet and those of none. And I, as your Secretary General, have been entrusted with a very sacred and important task, because my main task is to help maintain, foster, nurture, and support peace. Peace in our world today is so endangered, so precious, so needed. And the truth is, if we wish to have a peaceful world, it must start with us, each of us, because we are the arbiters of that peace. And Daaji spoke so powerfully this morning, because when we talk of peace, we do not talk about tolerance. We talk about respect, acceptance. But perhaps the word we've avoided today, the most important word, is love. We have to love one another. If you look at the essence of every faith, it is love. But we've also heard something else, because I know that every single person here today is my brother and is my sister. And why is that? We know that all of humanity, according to the scientists, all of humanity have come from 6 individuals. So we shouldn't get confused about the color of our skin, the size of our girth, the height that we have, because 99.9% of our DNA is the same, which means whether we like it or not, we are, in truth, brothers and sisters. And we face some real challenges. Today, our world is tightly bound by a tangled knot of crises spanning global systems. Conflict confronts us. Conflicts rooted in political differences, in economic disparities, in religious divides, in social injustices, and in our relationship with the natural world. And as I look around, I see
the Global Spirituality Mahotsav, but how is it expressed? Spirituality with children and our youth, spirituality with nature, with health, and the need to deepen it. These conflicts, which are rooted in our political differences and in our economic disparities and in our relationship with the natural world, these conflicts manifest themselves in various forms. From the conflict, the armed conflicts, which are tearing us apart, nation, to societal tensions threatening to divide communities. Whilst the sources of these conflicts are specific to each place, we all see and feel their tragic impact. As religious and political leaders, and indeed as responsible citizens, it is incumbent upon us to seek solutions to these conflicts, to strive for peace, and to build the bridges of understanding and cooperation. And the starting point in that search lies inside each of us. Because true, just, and durable peace cannot be achieved solely through external means. It must also emanate from within. If we do not have peace within ourselves, how can we have peace in our families? How can we have peace in our communities? How can we have peace in our regions? And how can we have peace in our world? Our world is precious. Our world is made in accordance with our values. Inner peace is not merely the absence of conflict or turmoil. It is a state of being characterized by harmony, clarity, and equanimity. It is the foundation upon which we can cultivate compassion, empathy, and understanding towards others. When we are at peace with ourselves, we are better equipped to navigate the complexities of the world with wisdom and discernment. This quality of inner peace is powerful, and it is contagious. And when we embody peace in our thoughts, in our words, and our actions, we inspire others to do the same. We create ripples of positivity which have the power to transcend boundaries and unite humanity in a shared vision of harmony and coexistence. Our Commonwealth, of which India is such a precious part, is in essence a platform, a powerful instrument to deliver that peace. And we are blessed with the ingenuity and imagination of 1/3 of the world. And our complexity, our diversity is our strength. Our shared humanity contains an immensely precious diversity of thought, culture, tradition, and experience. And we know that by listening to each other, we will find
so many of the solutions that we seek. From different and sometimes difficult histories, our nations sit together today as equals, our unique and enduring blend of shared values. So it's important that as each of us contemplate our part, we should understand how precious each of us is. That we have the power, if we choose, to change our world by sharing the love and the spirit that binds us. We've talked about the different pathways, and as I was listening to many, I remembered what was said in the Gospel of John. Jesus said this, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, and I go to prepare a place for you." That place is for every single human being on the planet. We all have one God. We are made in His image. And He loves each and every one of us equally. So I leave you with the blessing I left you last time when I was here. And because it's a blessing my mother always gives me when I go on a journey. And we, all of us, are on a journey to bring peace in our world. She would say this, "May God bless and keep you. May He make His face to shine upon you and be merciful unto you all the days of your life. May your guardian angel walk beside you, and may the Lord our God keep you safe in the palm of His hand." So God bless us all, and I thank you. Thank you very much, Madam Patricia Scotland. Thank you and pranams. As we close the session, I request from Ministry of Culture, Uma Madam Ji, to felicitate our esteemed spiritual gurus. Dr. Bhavani Rao Ji, let's all put our hands together. Thank you very much, Madam. Sadhvi Shilapiji Maharaj. Memento to Pujya Bhai Shri Ramesh Bhai Oza Ji. To Yogi Niranjan Nath Ji. और मास्टर जी राजेश कुमार जी. With a huge thank you and gratitude, and
felicitation to Right Honorable Patricia Scotland. Thank you so much. And ladies and gentlemen, let's all put our hands together. And at this moment, I'd like to mention about the tree plantation on this very special occasion. All the esteemed spiritual gurus gather for the tree plantation to mark this memorable day, coming forward to one zeal, one world, one faith. And in a short while from now, today's session, our esteemed Honorable President of India, Draupadi Murmu ji, shall be arriving. For that security purpose, we need to clear this premises in a short while.